Welcome to CVR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the inside news. Leader of opposition Rahul Gandhi criticized what he called a new approach to parliamentary proceedings. He questioned why Defence Minister Rajnath Singh was permitted to speak while opposition members, including himself, were denied the opportunity. Gandhi said, "The convention states that if people from the government side can speak, then we should also be given space to speak." His remarks reflect growing frustration within the India bloc, which has been demanding debates on Operation Sindhu, the Pahalgam terror attack and Trump's ceasefire claims. The Speaker's decision to adjourn amid sloganeering has further intensified tensions between the ruling and opposition benches. नहीं, देखिए सवाल ये है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। क्या सवाल चाहते हैं आप? क्या सवाल आप चाहते हैं सर? जो प्रधानमंत्री बट दौड़ के निकले हाउस से एक सेकंड में, तो डिस्कशन हाँ चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं है। थैंक यू। क्या सवाल क्या चाहता है? क्योंकि आप कहने प्रधानमंत्री से ही आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट होना चाहिए, किसी मंत्री के स्टेटमेंट को क्या नहीं मानेगा? मैम खत्म हो गया। थैंक यू। नहीं, देखिए सवाल ये है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। क्या सवाल चाहते हैं आप? क्या सवाल आप चाहते हैं सर? जो प्रधानमंत्री बट दौड़ के निकले हाउस से एक सेकंड में, तो Environment Minister Manjinder Singh says led a tree plantation drive at the BBG ground as part of Vana Mahotsav 2025, joined by members of the Delhi Bar Association, temple priests and Gurudwara leaders. The initiative themed Ek Ped Ma Ke Naam encourages citizens to plant trees in honor of their mothers, blending environmental action with emotional resonance. Sirsa highlighted that the campaign has expanded to 70 locations across Delhi, with supporters from the Supreme Court, Bar Association and religious institutions. The movement aims to plant over 70 lakh saplings citywide and has been praised by judicial leaders like Justice D.K. Upadhyaya and NGT Chairperson Justice Prakash Srivastava for transforming environmental responsibility into a collective civic duty. जी बिल्कुल, आज हमारे सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशंस, हमारे दिल्ली के रिलीजियस लीडर्स, मंदिरों के मुख्य पुजारी, गुरुद्वारा साहिब के मुख्य ग्रंथी, हमारा एक पेड़ माँ के नाम, हम इसको जन जन तक पूरे दिल्ली के अंदर पहुँचा रहे हैं। जब आज हम बात करें, आज इस वक्त 70 जगहों के ऊपर ऐसे प्रोग्राम किए जा रहे हैं। कहीं हमारे एमएलए जा रहे हैं, कहीं मैं खुद जा रहा हूँ, कहीं हमारे वन विभाग के लोग जा रहे हैं। हमारा पर्पस है कि दिल्ली को और ग्रीन करने के लिए, दिल्ली को प्रदूषित मुक्त करने के लिए हम जब तक प्लांट्स मैक्सिमम नहीं लगाएंगे, और इस मुहिम में हमारा आज बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं सारी बार एसोसिएशन का, जिनकी तरफ से विकास जी आकर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, हमारे ग्रंथी साहिबान, पुजारी साहिबान। तो मेरा मानना है कि अगर हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे, तभी इस दिल्ली को सुरक्षित, दिल्ली को हरित, दिल्ली को सुंदर और दिल्ली को सांस लेने वाली दिल्ली बना सकते हैं। इसमें सभी का योगदान होना चाहिए, इसलिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने आज एक हमारे साथ
कंधा से कंधा मिलाकर चलने का जो आश्वासन दिया है, इसके लिए Chief Minister Yogi Adityanath met with citizens at his official residence in Lucknow to address public grievances during a Janata Darshan event. Attendees came from districts including Prayagraj, Deoria, Saharanpur and Moradabad, raising concerns related to the land disputes, police matters, pensions and infrastructure. The CM emphasized that ensuring the safety and dignity of every citizen as the government's top priority. He directed officials to take prompt action on each complaint and personally interacted with families, offering chocolates to children and encouraging them in their studies. The outreach reflects the administration's commitment to the responsive governance and direct engagement with the public. Farmers' activities and political leaders gathered in Nawalgund, Dharwad district to commemorate the 45th Farmers' Martyrs Day, honoring those who lost their lives during the 1980 Farmers' agitation in Nargund. And in Nawalgund, the event featured floral tributes at the Martyrs Memorial and speeches highlighting unresolved agrarian issues. Minister H.K. Patil and MLA N.H. Konareddy joined the gathering, reforming support for farmers. Demands including implementation of the Kalasa Banduri Nala project, fair minimum support prices and drought relief measures. Farmer leaders also linked the commemoration to recent land acquisition protests in Davanahalli and Channarayapatna, dedicating to the day to these victories. The Karnataka Rajya Raita Sangha emphasized that the struggle continues with over 100 taluks facing drought and calls for scientific compensation, irrigation expansion and policy reforms. Let me know if you like a deeper dive into the 1980 revolt or current farmer movements in Karnataka. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ನಮನ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ರೈತ ಹೋರಾಟ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೈತ ಹೋರಾಟದ ಉದ್ದೇಶ ಸೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ರೈತನಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು, ರೈತನಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ರೈತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಂಥ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತೇನು ಹೋರಾಟ ಈ ಭಾಗದೊಳಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನರಗುಂದ ಭಾಗದೊಳಗ ಆಯ್ತು, ಅದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನವನ್ನೇ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ ದುರ್ದೈವ ರೈತರ. One week after his inspection of civic issues in Hinjewadi, Deputy Chief Minister Ajit Pawar conducted a comprehensive review of the progress made by various departments. Responsibilities had been distributed among MHADA, the District Collector, MIDC and PWD with the Water Resources Department. VMC and PCMC tasked with constructing a road over the Kasa Sai Canal. Pawar emphasized accountability and swift execution, especially in areas affected by waterlogging and traffic congestion. He reiterated that funding for unresolved projects would be provided through the District Planning Committee or PWD if PMRDA or MIDC were unable to support them. The review also covered the Pune Metro Line 3, drainage restoration and removal of illegal encroachments. The Deputy CM stated he would continue monitoring the situation every 7 to 10 days to ensure timely completion of works and improved quality of life for residents and IT professionals in the region.
तुम्हाला माहिती आहे गेल्या रविवारी मी अधिकाऱ्यांना घेऊन हिंजवडीला गेलेलो होतो. तिथं काही स्पॉट आम्ही बघितले. तुमच्यातले पण काही सहकारी मित्र त्याच्यामध्ये समावेश झालेले होते. त्याच्याबद्दल आज आठवडा झाला. तर काय झालं त्याच्याबद्दलची जबाबदारी आपण मसेंच्यावर टाकलेली होती, आपण कलेक्टरवर टाकलेली होती, आपण MIDCवर टाकलेली होती, आपण PWDवर टाकलेली होती. कासारसाईवरून जो काही कॅनॉल निघतो त्या कॅनॉलवर रस्ता करायचा त्याची जलसंपदा विभागावर टाकलेली होती आणि PMC PCMC कमिशनर. तर त्याचा आम्ही आढावा घेतला. त्याच्यात बऱ्यापैकी काम सुरू झालेलं आहे. त्याच्यात आपल्याला अनधिकृत बांधकामाच्या बद्दलचं पण जे काही अतिक्रमण काढायची ती पण काढायला सुरुवात झाली. आपण ज्या स्पॉटवर सकाळी 6ला गेलो होतो तिथं ते रस्ता करायचा होता तो पण त्यांनी पूर्णपणे बुजवलेला आहे. त्याच्यावर तिथल्या हिंजवडीच्या बऱ्याच जणांनी मागच्यापेक्षा कुठंतरी आमचे प्रश्न सुटायला सुरुवात झालेली आहे. एक आशावाद अशा पद्धतीनं त्यांनी सांगितला. टंडन म्हणून एक जण आहे त्यांना तिथं सर्वे करायला सांगितलं. वरच्या भागातनं पाऊस कुठनं कसा येतो आणि किती पाणी त्या ओढ्यात होतं, कुठले ओढे अडवले गेलेले आहेत, कुठले ओढे बुजवले गेलेले आहेत, कुठल्या ओढ्यावर बिल्डिंग केलेली आहे, त्याला सगळ्यांना स्टॉप वर्क केलेलं आहे. आम्ही ते बिल्डिंग पण पाडणार आहे. जिथं फारच मोठ्या बिल्डिंग असतील तिथं दुसरा काय पर्याय होऊ शकतो तो जलसंपदा विभागाला पण बघायला सांगितलं, MKVDCला आणि त्या टंडनला पण बघायला सांगितलेलं आहे. दोघांचंही सर्वेक्षण व्यवस्थितपणे चाललेलं आहे. ते वरपासून पार आपल्या नदीपर्यंत ते ओढे जातील अशा प्रकारचं त्याची रुंदी किती आहे, त्याची लांबी किती आहे, सरकारी मालकीची जागा किती आहे असं सगळं काढायला सांगितलं आहे. त्याचं मात्र सर्वेक्षण चाललेलं आहे आणि हे जर आमचं वेळेमध्ये करण्याचा माझा प्रयत्न आहे, माझ्या सहकारी अधिकाऱ्यांचा प्रयत्न आहे. पण ते जर झालं तर मध्ये जे काही हाहाकार माजला होता पाऊस पडल्यामुळं आणि हे सगळे ओढे बुजवल्यामुळं छोटे तिथं जागा ठेवल्यामुळं ते बऱ्यापैकी हिंजवडीचा प्रश्न निकाली निघेल. बरेच रस्त्यांचे प्रश्न आम्ही घेतलेले ते पण सोडवायला सांगितलेले. त्याची पण प्लॅन इस्टिमेटची कामं सुरू झालेली आहे. काही पैसे MIDC देते आहे, काही पैसे PMRDA खर्च करत आहे. तुम्हाला माहिती आहे गेल्या रविवारी मी अधिकाऱ्यांना घेऊन हिंजवडीला गेलेलो होतो. तिथं काही स्पॉट आम्ही बघितले. तुमच्यातले पण काही सहकारी मित्र त्याच्यामध्ये समावेश झालेले होते. त्याच्याबद्दल आज आठवडा झाला. तर काय झालं त्याच्याबद्दलची जबाबदारी आपण मसेंच्यावर टाकलेली होती, आपण कलेक्टरवर टाकलेली होती, आपण MIDCवर टाकलेली होती, आपण PWDवर टाकलेली होती. कासारसाईवरून जो काही कॅनॉल निघतो त्या कॅनॉलवर रस्ता करायचा त्याची जलसंपदा विभागावर टाकलेली होती आणि PMC PCMC कमिशनर. तर त्याचा आम्ही आढावा घेतला. त्याच्यात बऱ्यापैकी काम सुरू झालेलं आहे. त्याच्यात आपल्याला अनधिकृत बांधकामाच्या बद्दलचं पण जे काही अतिक्रमण काढायची ती पण काढायला सुरुवात झाली. आपण ज्या स्पॉटवर सकाळी 6ला गेलो होतो तिथं ते रस्ता करायचा होता तो पण त्यांनी पूर्णपणे बुजवलेला आहे. त्याच्यावर तिथल्या हिंजवडीच्या बऱ्याच जणांनी मागच्यापेक्षा कुठंतरी आमचे प्रश्न सुटायला सुरुवात झालेली आहे. एक आशावाद अशा पद्धतीनं त्यांनी सांगितला. टंडन म्हणून एक जण आहे त्यांना तिथं सर्वे करायला सांगितलं. वरच्या भागातनं Newly appointed Andhra Pradesh BJP President PVN Madhav expressed deep pride in leading the party, calling it an honor to uphold its legacy. He highlighted the state's long-standing contribution to the BJP's stack tracing its roots back to the Jan Sangh and Janata Party eras. Madhav emphasized that Andhra Pradesh has consistently played a vital role in shaping the party's national presence. He also reaffirmed his commitment to the strengthening the BJP's grassroots network and empowering local cadres. Madhav's leadership comes at a time when the party is expanding its footprint in the state, following notable gains in the recent elections. His remarks reflect a blend of historical reverence and forward-looking strategy, aimed at consolidating the BJP's position in Andhra Pradesh. I feel it's a honor for me to be president of Bharatiya Janata Party Andhra Pradesh.
The history of Bharatiya Janata Party in Andhra Pradesh is long. Since the times of Janasangh and Janata Party, and in Bharatiya Janata Party, Andhra Pradesh played a vital role. We brought lots of leaders at the help. Lots of people from Andhra became cabinet ministers, even president of Bharatiya Janata Party, national president. Two people from our place have become national presidents of the Bharatiya Janata Party, one of the largest political party in the world. So I feel a privilege and honor to be a president of this party. And since my childhood, I am into this ideology. I have been an RSS activist, then into Akhil Bharata student wing ABVP, then in Swadeshi Janmanch, I worked full-time for the organization. Then later when I entered into Bharatiya Janata full-time politics, I was there in Yuva Morcha in different levels. I toured around the country. I've been very fortunate to work in KVIC and organizations like Swadeshi, in which I got an opportunity to go to all corners of the country. And after traveling around, I find Andhra Pradesh to be one of the best states, having lots of resources, a coastline which is the largest coastline any state has got. And the maritime coastline has increased to 1,053 kilometers. So this is a great advantage to our state. Definitely we'll be taking full advantage of it. Around 8 ports are coming up. There are existing 4 ports, and new four ports are coming up. And the total capacity of 1,064 metric tons of capacity is increasing in our maritime business. So we'll be taking full advantage of it. And East Coast is becoming most vital, and Andhra Pradesh and Visakhapatnam are the key areas. So almost the Indian Ocean, the government is also contemplating of taking advantage of the blue economy through our Visakhapatnam. So the major ports are coming near Visakhapatnam, and Bhavanapadu, another airport, and another port is coming. Apart from this, the number of roads that are there through our place, we have a Chennai Visakhapatnam corridor, freight corridor. It is being aligned, and Sagarmala project is also big way investments are being done in our place. I feel it's a honor for me to be president of Bharatiya Janata Party Andhra Pradesh. The history of Bharatiya Janata Party in Andhra Pradesh is long. Since the times of Janasangh and Janata Party, and in Bharatiya Janata Party, Andhra Pradesh played a vital role. We brought lots of leaders at the help. Lots of people from Andhra became cabinet ministers, even president of Bharatiya Janata Party, national president. Two people from our place have become national presidents of the Bharatiya Janata Party, one of the largest political party in the world. So I feel a privilege and honor to be a president of this party. And since my childhood, I am into this ideology. I have been an RSS activist, then into Akhil Bharata student wing ABVP, then in Swadeshi Janmanch, I worked full-time for the organization. Then later when I entered into Bharatiya Janata full-time politics, I was there in Yuva Morcha in different levels. I toured around the country. I've been BJP MP Jagdambikapal expressed concern about the opposition repeated disruptions in Parliament, stating that despite the government's willingness to address any issues raised, the Congress continues to create Ruckus. He noted that even on the current day, the Prime Minister had appealed for the House to function smoothly. Paul alleged that such behavior had become habitual for the Congress party and pointed out that Rahul Gandhi often absents himself during discussions on matters he himself raises. He further remarked that the opposition was now questioning the Bihar special intensive revision of voter rolls, which according to him indicated their acceptance of defeat in Bihar and an attempt to shift blame onto the voters list. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये सदन जनता की आकांक्षाओं का सबसे बड़ा सर्वोच्च फोरम है। ये सदन इस बार हो रहा है जब पूरी दुनिया ने भारत के सैन्य के पराक्रम को देखा है, जब पूरी दुनिया ने देखा कि 22 मिनट के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर हमारी सेनाओं ने लक्षित ढंग से उनके जैसे मोहम्मद हो, लश्कर तोयबा हो, हिजाबुल मुजाहिदीन के हों, उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। तो ये विजयोत्सव का है। यहाँ पे इस सदन में आज उनके शौर्य पराक्रम की चर्चा होनी चाहिए। आज दुनिया में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, हम 10वीं अर्थव्यवस्था पे थे।
और आज हम तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। तो आज इस पार्लियामेंट में विपक्ष क्यों हंगामा करना चाहता है? खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा, स्पीकर साहब ने कहा, कल संसदीय कार्य मंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग कहा कि कोई भी विषय अगर विपक्ष उठाना चाहता है उसको उठाए, स्पीकर साहब उस पर चर्चा का अवसर दें। सरकार हर विषयों पे, विपक्ष के हर सवालों पे जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन सर, कांग्रेस जो है वो प्रधानमंत्री से जवाब चाहती है, वो चाहती है कि जो जितने भी जवाब हैं प्रधानमंत्री खुद दें। देखिए, प्रधानमंत्री तो लगातार जवाब दे रहे हैं, आज भी अपील कर रहे हैं कि सदन चलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो पूछ रही है, क्या कहते थे लोग मनमोहन सिंह जी को कि मोहन सिंह जी हैं, तो सवाल का जवाब अगर गृह विभाग से है तो गृह मंत्री जी देंगे, अमित शाह जी। सवाल अगर संसदीय कार्य मंत्री से जुड़ा हुआ वो देंगे या विभागीय मंत्री देंगे। और निश्चित तौर से जब प्राइम मिनिस्टर को बोलना होता है तो महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे पूरे सवाल का जवाब देते हैं या इंटरवीन करते हैं। ये आखिर सदन चलने दें, सदन में हंगामा खड़ा करना ये कांग्रेस की आदत बन गई है, क्योंकि खुद राहुल गांधी सदन में नहीं बैठते हैं, खुद सदन में किसी महत्वपूर्ण सवाल पे बाहर तो बहुत सवाल उठाते हैं, लेकिन सदन के अंदर जब वो सवाल पे चर्चा होती तब वो नहीं बोलते हैं। तो ये तो देश देख रहा है कि विपक्ष केवल आज हंगामा करना चाहता है। आखिर बिहार के सर कोई इशू को लेकर के कब चुनाव नहीं हुआ कि चुनाव के पहले चुनाव आयोग ने घर घर जा कर के आज डोर टू डोर उसने वोट का वेरिफिकेशन न किया हो कि अगर कोई 18 साल का हो गया तो उसे नया उसको मतदाता बनाया जाता है, अगर किसी की डेथ हो गई तो उसको डिलीट किया जाता है, कोई ट्रांसफ़र हो गया। तो ये एक प्रक्रिया है, उस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। इससे साफ है कि कल तक तो ये चुनाव हारने के बाद ठीकरा ईवीएम पे फोड़ते थे, आज तो अब चुनाव के पहले ही बिहार के इन्होंने हार स्वीकार कर ली है और अब वो ठीकरा मतदाता सूची पे फोड़ रहे हैं। For a discussion on the special intensive revision of electoral rolls, he has asserted that Bihar, being the capital of democracy, must not witness any attempt to undermine democratic principles. He had warned that any move to disfranchise the poor or erase their presence from the voter list would be met with the strong resistance, and pledged to fight to protect their voting rights. आज से विधानसभा सत्र जो है वो चालू हुआ है और अभी हम लोगों की महागठबंधन के विधायक दलों की बैठक खत्म हुई है और हम सब लोगों की मांग है, स्पीकर महोदय से भी और हम लोगों ने बात की है कि एसआईआर पर जो है विधानसभा में कम से कम चर्चा जो है कराई जाए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बिहार विधानसभा है और बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहीं से लोकतंत्र अगर समाप्त करने का कोई प्रयास करेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले थे। पार्लियामेंट में भी हम लोग पार्लियामेंट हो, सड़क हो, हर जगह हमारे गरीबों को वंचित ना किया जाए वोट के अधिकार से, उनका अस्तित्व ना मिटाया जाए, इसलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। और कल जो है बड़े पैमाने पर अगर सरकार नहीं मानेगी, स्पीकर नहीं मानेंगे चर्चा कराने पर, तो हमको लगता है कि आने वाला समय जो है इन लोगों को जवाब देते नहीं बनेगा। अपराध तो है ही बढ़ा हुआ, लेकिन हम सब लोग हर एक मुद्दे को हम लोग उठाएंगे। आपका ध्यान आकर्षण है, कार्य स्थगन प्रस्ताव है, तो देखते हैं। हमने तो सभी नेताओं को हमने चिट्ठी लिखी है इस मुद्दे को लेकर के और पार्लियामेंट में भी लोग जो है इस मुद्दे को उठा रहे हैं मजबूती के साथ, इंडिया अलायंस के लोग, और बिहार में भी कल बहुत मजबूत तरीके से हम लोग जो है इस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं और इस पे सरकार को किसी भी कीमत पर अध्यक्ष जी को चर्चा करानी ही पड़ेगी। A sea of devotees gathered at the historically Lingaraj temple in Bhubaneswar, Odisha, to offer praise to Lord Shiva on the second Monday of the holy month of Savan. The temple, known for its 11th century Kalinga architecture and Swayambhu Shivalinga, witnessed long queues from early morning as worshippers performed
rituals like Rudrabhishek and Mangala Arati. The atmosphere was charged with the chants of Har Har Mahadeva and Om Namah Shivaya as devotees offered by leaves, bhang, milk and panchamrit to the deity. Security was heightened and crowd management measures were in place to ensure smooth darshan. The Lingaraj temple, open daily from 6 a.m. to 7 p.m., remains one of the most sacred sites in Odisha, especially during Savan, when each Monday holds deep spiritual significance. Chief Minister Rekha Gupta visited the Kanwar camp at Shiva Mandir Tapur Dharmashala on Sunday, where she praised the visible enthusiasm of Delhi's participating in the Kanwar Yatra. She emphasized that Delhi government is making comprehensive arrangements to ensure that devotees of Lord Shiva face no inconvenience. As part of the initiative, CM Gupta distributed eco-friendly kits, including jute bags and containers of Ganga water, to promote environmental responsibility. This effort is part of a broader campaign that includes support for 374 Kanwar committees across the city, with camps equipped with electricity, healthcare, sanitation, and welcome gates at the Delhi's borders. जो उत्साह है, जो उमंग है, कावड़ के इस पावन त्योहार की हजारों भोले के भक्त, लाखों यात्री दिल्ली से होकर के गुजर रहे हैं और दिल्ली के अंदर के यात्री भी दिल्ली में हरिद्वार से जल लेकर के पहुंचे हैं। दिल्ली सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है कि जिसके कारण से हमारे भोले के भक्तों को कोई सुविधा में कमी ना रहे। और आज हमने हर भोले को जो कावड़ यात्रा लेकर के चल रहा है उसके लिए गंगा जल की डोलची और जूट का बैग वितरित करा है। और मैं समझती हूँ ये तो प्रतीक चिन्ह है केवल मात्र अपनी शुभकामनाओं का कि प्रभु की आराधना, प्रभु की भक्ति और ये श्रावण मास में हम सब किसी ना किसी रूप में जो उत्साह है, जो Madhya Pradesh Minister Kailash Vijayawagariya visited the revered Mahakaleshwar temple in Ujjain on the second Monday of Savan and described the experience as one of the indescribable joy and spiritual fulfillment. Speaking to the reporters after offering prayers, he said that Baba Mahakal's presence ensures the welfare of all devotees and that the temple is the true abode of Lord Bholanath. The Mahakaleshwar temple, one of the 12 Jyotirlingas, is a major pilgrimage site that draws thousands of worshippers. During the holy month of Savan, Vijayawagariya visit coincided with the special rituals including the Mangala Arati and Rudrabhishek, performed in the Gauri Shankar form of Lord Shiva. नहीं, बहुत आनंद की बात है। यहाँ तो आने के बाद